हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के करने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, और इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट वो। तो उन सब के मैंने कुछ थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे लिए। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. 1 mole of ice melts at 0 degrees Celsius at a constant pressure of 1 atmosphere. 1440 calories of heat is absorbed by the system. The molar volume of ice and water are 0.196 and 0.0180 liters respectively. Calculate delta H and delta E. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? They have given us the value of delta H, which is 1440 calories, right? And they're saying कि ice is melting to water. What is going to be delta V over here? They've given us the volumes of both. So delta V will be equal to 0.0180 minus 0.0196, which becomes equal to minus 0.0016 liters. So ये हमारे पास आ गया delta V. Now, what is the value for P delta V? The value of P delta V will be pressure is 1 atmosphere into minus 0.0016, which becomes equal to again minus 0.0016. So हमारे पास P delta V की value जो है that we have got. The equation, अब इसको लिटर एटमॉस्फेयर को हमको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमको 1440 कैलोरीज ऑफ हीट दी हुई है. सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? 1 liter एटमॉस्फेयर, कन्वर्जन फैक्टर हमारा है 1 liter एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 24.20 कैलोरीज. देयरफॉर converting 0.0016 liter atmosphere into calories, we will get minus 0.039 calories. Now let's hit the expression. Delta H is equal to delta E plus P delta V. So delta E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H माइनस P delta V. So delta H की वैल्यू is given to us as 1440 calories minus P delta V की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं 0.039. On calculating, we are getting over here 1440.039 calories. So this is the answer. Okay, let's go on to question number 2. Consider a system consisting of 1 mole of a diatomic gas contained in a piston. What is the temperature change of the gas? Q आपको दिया हुआ है और W भी आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट वैल्यू लगाना है, एक्सप्रेशन लगाना है डेल्टा E which is equal to Q plus W. ठीक है, so which will be equal to 50 minus 100. Now molar heat capacity जो CV होती है, तो ये आ गया आपके पास minus 50 joules. Molar heat capacity CV, that is equal to delta E upon delta T. So you have to find delta T over here. Delta T की वैल्यू क्या आ जाएगी? Delta E upon CV, which is equal to minus 50 joules upon CV, which is given to us as 5. फाइव अपॉन टू इंटू आर. सो इस तरह से हम CV की वैल्यू जो है उसको लगाएंगे. सो वी हैव minus 50 upon 5 upon 2 into 8.314. On calculating, we are getting over here minus 2.405 Kelvin. So the gas will cool by 2.405
405 Kelvin. Okay, let's move on to question number 3. System is provided 50 joules of heat and work done on the system is 10 joules. The change in internal energy. So ये तो बहुत ही I don't think it's a very difficult question. बहुत ही easy सा ये question है, पर ऐसे questions नीट में काफ़ी common होते हैं. तो only thing is कि यहाँ पे हमको sign conventions पता होना चाहिए. So Q की value क्या आ जाएगी? Delta U minus W. So minus W work done by the system हो गया. अब यहाँ पे आपको दिया है system is provided with 50 joules. Provided. Alright. तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो गई? सिस्टम को हम दे रहे हैं 50 जूल्स, तो डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? Q प्लस W. सो वर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो Q की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है यहाँ पे? And work done on the system is 10 joules. So 50 plus 10. So आप देख सकते हो कि the option B is correct. Alright. अब इधर 40 joules भी दिया हुआ है. अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपका गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा. Next question. The work done during the process when 1 mole of a gas is allowed to expand freely. Expand freely का मतलब क्या होता है? That external pressure जो है that is equal to 0. So work done क्या हो गया? Minus P delta V. So अगर P external यहाँ पे 0 है तो work done will also be 0. तो free expansion में work done is always 0. Question number 5. 1 mole of a gas absorbs 200 joules of heat at constant volume. Its temperature rises from 298 Kelvin to 308 Kelvin. The change in internal energy is what? So, change in internal energy आपको find करना है. Alright. Q is equal to delta U minus W. वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो W that is equal to 0. So if W is equal to 0, that means Q is equal to delta U. So the correct option over here is A. Question number 6. The enthalpies of formation of N2 and NO are 28 and 90 kilojoules per mole respectively. The enthalpy for the reaction N2O plus O2 gives 4NO, that is equal to what? Okay. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है enthalpies of formation. तो delta HR आप कैसे फाइंड करोगे? H of products minus H of reactants. सिंपल सी रिएक्शन है, बट इस पे प्लीज ऑल्सो कंसिडर द स्टॉक्योमेट्री. सो प्रोडक्ट्स में आपके पास आ गया 4 इंटू 90 माइनस 2 इंटू 28. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 304. Correct option over here is D. Let's go on to question number 7. 5 moles of an ideal gas at 27 degrees centigrade expands isothermally and reversibly from a volume of 6 liters to 60 liters. तो इस पे आपका जो expression use होगा that is W is equal to minus nRT 2.303 log of V2 upon V1. So let's put the values. Minus 5 into 8.314 into temperature which is 327 degree को हमने convert करा into Kelvin which is very important, into 2.303 log of 60 upon 6. तो ये आ जाता है आपका log of 10 which is equal to 1. On calculating this we are getting this as minus 28,720.7 joules और किलो जूल्स में कितना आ गया? minus 28.72 kilojoules. So the correct option over here is B. Let's go on to the question number 8. 10 mole of ideal gas confined to a volume of 10 liters is released into atmosphere at 300 Kelvin where the pressure is 1 bar. What is the work done? तो अब इसमें इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है 10 liters.
ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है. फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी? nRT upon P according to the gas equation. So this is equal to 10 into 0.083 into 300 upon 1. So this becomes equal to 249 liters. ठीक है. Now what is going to be delta V? Delta V आ जाएगा आपका 249 minus 10, which is equal to 239. Which is equal to 239. वर्क डन क्या आता है? P इंटू डेल्टा V. प्रेशर आपको दे रखा है 1. So this will be 1 into 239, which is equal to 239 liter bar. So what is the correct option over here? C. Let's move on to question number 9. अब ये assertion reason का question है. So assertion आपको दिया है Cp minus Cv, which is equal to R, correct? And du upon dt is equal to 0 for ideal gas. This is also correct. Right? But reasoning correct नहीं है. तो अगर reasoning correct नहीं है, then the correct option over here is going to be B. Let's move to the last question. A process is called adiabatic if the system does not exchange heat with the surroundings, correct? It does not involve increase or decrease in temperature of the system. So उसपे increase or decrease of the temperature of the system हो सकता है. ठीक है, वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा तो उसको सिस्टम को हम क्या बुलाएंगे? इट इज नोन एज इंसुलेटेड. सो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी. So that is all what we have today. Tomorrow we will go on to the next topic.